नमस्कार बंधुगण जय श्री जगन्नाथ आपण समस्त पुणे एक नूतन भिडियो स्वागत आम प्रत्येक दिन कहीचु शिक्षा शिक्षक छात्र छात्री विभिन्न समस्या सहित शिक्षा विभाग विभिन्न चिठी आम पाखे पहुँचू कौन प्रकार मिथ्या खबर ये प्रकाश करूँ ना केवे भी चैनल प्रथम कही आप निजस्व मतामत देवे आपंक क्लस्टर हो ब्लॉक हो जिले जब कौन असुविधा कमेंट बॉक्स जनइबा आज से एक गुरुत्वपूर्ण विषय को नहीं आम आलोचना करूँ जहाँ केवल राज्य नुहे समग्र देशर एक परिस्थिति सृष्टि करथिला 2025 रे जेतेबेले सुप्रीमकोर्ट गोटे ऑर्डर आसला महाराष्ट्र गोटे घटना को लेकिन ताकू नहीं विभिन्न गणमाध्यम ठू आरंभ कर विभिन्न साधारण शिक्षक शिक्षयित्री मन में किसी न कि गुंजरण सृष्टि होता कारण जी दीर्घ वर्ष धरी 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष धरी शिक्षादान कर गोटे टीईटी आसला जहाँकि आपंकर जब देखिए सुप्रीमकोर्ट जजमेंट था 1/9/2025 से जजमेंट को लेकिन विभिन्न महल में चर्चार विषय होता केन्द्रबिंदु होता विभिन्न कथा आसला ताकू नहीं अनेक समय समस्त राज्यर शिक्षक संगठन हो विधानसभा ठू आरंभ कर देशर सर्वोच्च पार्लियामेंट पर्यंत आलोचना होता यही परिप्रेक्षी गोटे राज्यसभार जोटा कि आम कहूँ नियम आसी आप अमेंडेड बिल 2026 पास होगा जाऊँगी जोटा कि सब चर्चा अच्छी से टीईटी बा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को नहीं आज आलोचना वितर्क निश्चित शेष पर्यटन देखिए आप समस्त गुरुत्वपूर्ण कारण से हूँ तो शिक्षक मैंने प्रमोशन पाइबारे विशेषकर मो राज्य में वंचित होते दीर्घ वर्ष धरी 5 वर्ष हाँपाई जाऊँगी परिप्रेक्षी देखूँ द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडेड बिल 2026 लिखाई कथा जे फर्दर टू अमेंड द राइट ऑफ चिल्ड्रेन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जोटा कि 2009 आसला एवं ताको पार्लियामेंट इन द 77th year of Republic India is following this act may be called right of children free and compulsory education amended act 2026 short title and compensation कथा कहुई इट सेल सम into come into force at once तो सेकंड पैराग्राफ लिखले इन सेक्शन 23 द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 रे एक कथा समस्त जानते जे टीचर हिसाब रे समस्त जानते जे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बा एक्ट जोटा कि 2009 रे आसीथिला आटे कथा कह राइट टू एजुकेशन रे एवं तार जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कथा कहुला सेक्शन कराइला से परिप्रेक्षी जो कथा कहुई कंपलसरी एजुकेशन 2026 एक्ट अमेंडेड एक्ट प्रेस्क्राइब कराला तो सर्विस प्रमोशन जोटा कि आप एज ए कंडीशन फॉर कंटिन्यूएंस इन सर्विस प्रमोशन सीनियरिटी टर्मिनल बेनिफिट्स रखाई द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग एनी टेस्ट जो जेकोसी गोटे टेस्ट आवश्यक होता पासिंग पाई सच अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट सेल अप्लाई प्रोस्पेक्टिव एंड ओनली टू अपॉइंटमेंट मेड आफ्टर द कमेंसमेंट एक्ट आफ्टर सच प्रोस्पेक्टिव डेट एज मे बी नोटिफाइड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तेणु जिते आप गोटे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहु गोटे निजुक्ति जो पाँच आपंकर जिते गोटे डेट नोटिफिकेशन थाए गवर्नमेंट सरकार तरफ ताहा मध्य आवश्यक अच्छी बा एडिशनल क्वालिफिकेशन आप ऐड कर परमिशन नहीं कथा कहुई नो टीचर अपॉइंटमेंट पोजिशन प्रायर द कमेंसमेंट एक्ट appropriate government under sub section any other adverse service consequences to the ground failure test or such other additional qualification respectively prescribed under this act. The appropriate government shall prescribe guidelines for professional upgradation, training and capacity building, teachers appointment or in position prior commencement of this act without linking such measures to service security or promotional eligibility. तेणु जिते आपण मानकर जिते एज ए टीचर हिसाब से आप प्रोफेशनल अपग्रेडेशन क्वालिफिकेशन कौन ट्रेनिंग नौ कैपेसिटी बिल्डिंग यथा टीचर जो अपॉइंटमेंट होती पोजिशन
प्रमोशन एलिजिबिलिटी सर्विस सिक्यूरीटी कथा कहुई से एक्ट रे जोटा कि 2009 आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट आसला एवं एनी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट that may be notified appropriate government shall be named operate positively. The provision this section shall have overlapping effect not withstanding anything in consent एवं तार जो पारा गुड़ा अच्छी धारा गुड़ा एक्ट से एक्ट अनुसार से जहाँ कहवा कथा जे आपणकर जो रूल एंड रेगुलेशन रही आफ्टर सेक्शन गुड़िक रही से सेक्शन गुड़िक जो पर्पज गिविंग इफेक्ट प्रोविजन एंड एक्ट डिरेक्शन क्लारिफिकेशन गवर्नमेंट गाइडलाइंस नेसेसरी निश्चित आवश्यक अच्छी कारण जो गोटे आपण देखिए गाइडलाइन आसे तार किसी नोटिफिकेशन आसे गेजेटेड को जाए गेजेट रे पास हुए और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन गुड़िक ये स्पष्ट लिखाई जे जा राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 एक्ट नंबर पड़ी 35 ऑफ 2009 was enacted to give effect to Article 21A Constitution and to secure the fundamental rights of every child to free and compulsory elementary education. ये कथा समस्त जानते मागणा जोटा कि आपंकर पोशाक ठू शिक्षा खाଇବା सबकि तो राइट टू एक्ट 2009 लागू कराइला तो ये लिखाई देखो प्रेस्क्राइब ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स ऑन दिस बेसिस व्हिच द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड एज ए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर तो ये स्पष्ट अच्छे जोटा कि आरटी 2009 जे गोटे टीचर मिनिमम क्वालिफिकेशन से एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट एज ए टीचर हिसाब से करिवो. While the goal of enhancing teacher quality is necessary, recently judicial interpretation has resulted. एट स्पष्ट आप लाइन गुड़ाक देखु recent judicial interpretation has resulted in the retrospective application of TET requirement of teachers who are amended prior the commencement the RT Act in accordance with requirement rule qualification and procedures validity in the force at the time of their appointment the issue has देखो ये जो इश्यूटा आरंभ होती कथा से लिखाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेट 1 सेप्टेम्बर 2025 जो जजमेंट है अंजुमाला साद ई तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये जो भीतर चलला गोटे ये लिखाई अंजुमा ई तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भितर एंड अदर by interpretation section 23 of RT Act, Apex Court held that TET constitutes a mandatory minimum qualification not only for fresh requirements. ये देखो fresh, not only for fresh केवल fresh नुहे but also the teachers requirement prior. Supreme Court directed that in service teachers having more than 5 years जोटा सुप्रीम कोर्ट कथा कहउथला बा जहा सब गणमाध्यम मत बाजुतले 5 वर्ष जमन रिमेनिंग अछि मस्ट क्वालिफाई within 2 years judgment before 1/2027 कथा कहला एवं बट रिमेनिंग इन एलिजिबल फॉर प्रमोशंस विदाउट इट ये कथा कह जाउतला किंतु सच रिस्ट्रिक्टिव एप्लिकेशन हैज जनरेटेड जोटा कि आपनकर एटी कह देखंतु टीटी क्वालिफिकेशन वुड नॉट ओनली अंडरमाइन legitimate service expectation and principle of natural justice but also risk stabilizing the continuity and institutional stability of education system the country. So the constitution envisages that legislative policy must operate with fairness, vigilance and proportionality. So the proposal bill seeks to clarify तो ये जो 2026 अमेंडमेंट रूल कथा कहूँ प्रपोजल थिला प्रपोज थिला क्लारिफाई करागला द रिक्वायरमेंट द पासिंग टीटी टेस्ट बा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सच ऑर्डर अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अंडर द टी एक्ट सेल ऑपरेट
prospective and shall apply only to appointment after the commencement act ତେଣୁ କୋଉମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ବା ଲାଗୁ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ while simultaneously structural professional upgradation and training without linking such measures native constitution. The bill therefore seeks to harmonize the objective improving educational standard with the quality important constitutional mandate of fairness, equity, and protection of vested service rights. Both quality education, children, and dignity and security for in-service teacher. The bill seeks to achieve and set objective. ये देखो जॉन ब्रिटास जे कि ताको एक्सप्लेन करथिले डिटेल एवं डिटेल तांकर आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 कतरू आपंकर कोर्टर जो आस्तेला महाराष्ट्र जो कथा को नेकी ताको पूरा सविशेष डॉक्टर जॉन ब्रिटास एमपी जे कि आपंकर केरल सांसद से तांकर कथा मते उठेथिले एवं क्लारिफाई देछन किछि राइट टू एजुकेशन जेहेतु 2009 रे आसीची तेनु ताको बेस करिकी नियुक्ति हो अन्य कथा कहूँ एवं ये गोटे लाइन देखते कि 31 मार्च 2015 हु डज नॉट प्रोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन अंडर सबसेक्शन एवं तापर लिखा राइट ऑफ चिल्ड्रेन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडेड एक्ट 2017 आसला जोटा कि 24 ऑफ 2017 तेणु ए स्पष्ट हूँ जो कथा को लेकिन प्रमोशन दुनिया गुलिया घंटिया भितर प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री थे स्पष्ट बिल हो तो जहाँ पास हो सरकार निश्चित पास कर जहाँ आसब समस्त भल हम कारण सीनियर ऑलवेज सीनियर नो डाउट ये परिप्रेक्षी ये आज आलोचना निश्चित निजर मतामत देवे आज धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ।